Assalamualaikum students. Today we have to do chapter number 6, congruent and similarity. I think so all of you know about the congruent. Congruent means two or more shapes having the same shape and same size. And always remember, when any shape is same, this means the angles are equal. And obviously when size is same, this means sides are equal. Okay. And there are so many real life examples in our surrounding regarding congruent figure. Okay. And one more thing you have to keep in mind, then whenever we have to move or rotate or reflect any of the two congruent objects, they will remain the same. Okay. And as you know that tessellation is also one of the most important example of congruent figure. Another real life example of congruent is photocopy. As you photocopy document is of the same shape and size as the original document. Okay. The concept of congruence also plays an important role in the manufacturing sector. The congruence of pen refills allow us to refill our pens when they run dry. एंड वन मोर थिंग, कॉन्ग्रुएंट बेटा हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको देखा अगर कोई चीज सपोज आपकी मामा ने मंगवानी है, तो वो अगर उसका साइज और उसकी ब्रांड और उसका बता दें कि उसकी कितनी मेजरमेंट होगी, तो सेम वही चीज है वो खुद लेने जाएंगी और किसी और से मंगवा सकती हैं. सिमिलरली अगर आपके बाबा की कार खराब हो जाए, कि इसके बजाय कि वो बिल्कुल रुक जाए, वो एक छोटा सा पुर्जा जो खराब है आप सिर्फ उसी साइज और शेप का जब उसके अंदर फिट कर देंगे, वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगी. और कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में. पहले जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो इवन लोग किडनी से या लीवर फेलियर से फोत हो जाते थे. लेकिन अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये सारी जो हो रहा है ये किस बेस पे हो रहा है? हर शख्स को हर एक का किडनी नहीं लगेगा, लेकिन जिसका साइज और शेप, और ऑब्वियसली मेडिकल साइंस ऑफ व्यू से ब्लड ग्रुप और भी डिफरेंट थिंग्स हैं जो दे मस्ट बी द सेम. लेकिन जो एज सो फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, कि वो शख्स जिसका किडनी का साइज और शेप उस दूसरे वाले पेशेंट से मैच कर जाए, वो ही सिर्फ उसके अंदर लग सकते हैं. ओके, so this is all about congruence. Now we comes to similarity. Actually, one more thing I want to say, that congruence is the part of similarity. When the size and shape is same, then we have to say it is a congruent. Clear? And the similarity, very important example of similarity is your uniform. Obviously, some boys are taller, some are smaller, but the shape of their uniform is same, but the size are different. So this is the main characteristic of similarity. Okay, so we have moved towards our main points. Okay, again, I will repeat all that. Two figure or objects are congruent if they have exactly the same shape and size. And please keep in mind that same shape mean their angles are equal, and size mean their sides are also equal. Okay. Now we come to the second point. They can map onto each other under translation. Translation mean, okay, I will tell you with the example what is the meaning of translation. Suppose if you draw an object, just look here. This is an object, okay, and I have to change the color. Here you draw. This one is one object, and if I have to draw the same shape and size another object, both objects have the same shape and they have the same size. Okay, so this means both are congruent. But if I have to move one object, look here, if I have to move this one object, look here, this one is the first object. Just give me, I have to draw it again.
Look here. I want to clear the concept of translation. Okay. This one is the one object. And this one is the second object. Okay. Both have the same shape and the same size, but one is upward and the other is downward. Okay. So this is called the translation. Clear? Now translation is clear. Now we comes to rotation. Rotation means if we have to rotate any of the object. And always remember, when we want to rotate any of the object, it is necessary that first we have to transfer it into a center, then we have to rotate. And rotation always clockwise or anti-clockwise होती है. And reflection, आपने देखा होगा जब भी हम मिरर में से, अगर सपोज आप मिरर के आगे खड़े हैं और आपका बेड मिरर से 2 फीट राइट साइड पे है, तो आपको इमेज कैसे नजर आएगा? 2 फीट लेफ्ट साइड पे. यानी रिफ्लेक्शन हो, रोटेशन हो या ट्रांसलेशन हो, टू ऑब्जेक्ट्स का अगर साइज और शेप सेम है तो ये, बट दीज आर द एग्जांपल ऑफ congruent figure. Okay. Next, third point is the corresponding angles and sides of congruent figure are equal. Fourth point, symbol used for congruent is these 3 dash. Number 5 point, congruence is the property of geometrical figure. Okay. It is the most important characteristic of geometrical figure. Congruent बहुत important है किसके लिए? geometrical figure. Tessellation is an example of congruent figure. टेस्लेशन क्या होता है? देखिए, आपके घर में मुख्तलिफ बेडशीट्स होंगी जिसमें एक जैसा डिजाइन बना होगा. ओके. या आपके मामा का कोई दुपट्टा होगा जिसमें जो फूल होंगे वो एक खास सीक्वेंस होंगे, कलर में भी डिफरेंट वन. ओके. ये देखें, सपोज दीज आर द सर्कल ऑफ द सेम साइज, और अगर इससे हम कोई डिजाइन बनाएंगे, चाहे अपनी बेडशीट पे, चाहे दुपट्टे पे, किसी चीज पे, तो ये चूंकि सारे जो उनसे सर्कल्स हैं, दे हैव द सेम शेप एंड साइज. ठीक है. सिर्फ उनका कलर चेंज है. तो ये किस चीज की एग्जांपल है? ये एग्जांपल है टेसिलेशन की. ओके. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेसिलेशन. इज इट क्लियर? सो दीज आर द 6 पॉइंट. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. Okay. After 6, this is the 7th point. Photocopying is an example of congruent figure from our daily life. जब हम किसी भी पेपर को फोटोकॉपी करते हैं तो वो जितने मर्जी हम नंबर ऑफ फोटोकॉपीज हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के इक्वल के अकॉर्डिंग ही होते हैं. ओके. सो फोटोकॉपिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ congruent figure. Number 8, the concept of congruence also plays an important role in the manufacturing sector. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाउ इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? थिंक इट ओवर, देन आई विल आस्क यू, टेल यू लेटर ऑन. 9, the congruence of pen refills allow us to refill our pens with when they run dry. अब जैसे ये देखिए, बोर्ड मार्कर, इसकी जब मेरी इंक खत्म हो जाती है, इसके बजाय मैं पेन को डस्टबिन में डाल दूं, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रीफिल कर देती हूँ. तो ये जो रीफिलिंग है, ये भी कॉन्ग्रुएंट की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ओके. नाउ वी कम्स टू द 10th पॉइंट. दिस इज congruence is a special case of similarity. Congruence is a special case of similarity. How? जब उसका साइज और शेप सेम हो जाए तो वो क्या बन जाता है? congruent. So congruence is a special case of similarity. Number 11, two figures are similar if they have exactly the same shape but not necessarily the same size. Okay, this one is the 11th point. So we move towards the next point. 12th point. Okay, first I have to erase that. Just okay. Two polygons. Do you know what are polygons? Any closed figure who have at least 3 sides. कम से कम उसकी 3 sides और मैक्सिमम की कोई लिमिट ना हो, और क्लोज फिगर हो तो उसको वो क्या होगी? पॉलीगॉन. 2 polygons are similar. Okay, then but if 2 polygons are similar mean their shape is same but the size is different, then all corresponding angles are equal. Why corresponding angles are equal? Because their shape is same. And all corresponding sides are equal? No. In similar figure, all corresponding sides are not equal. All ratios of corresponding sides are equal. Okay, I have to write it for you.
all ratios. Okay. The second point is all ratio of corresponding sides are equal. क्योंकि sides कौन सी होती हैं similar figure में, they are proportional. Okay. Okay. Congruence is a special case of similarity. We have already discussed. All ratio, हाँ ये सही लिखे. All ratio of corresponding sides are equal. और two polygons अगर congruent होंगे, then all corresponding angles are equal and all corresponding sides are also equal. Congruent में दोनों equal है, लेकिन similar में equal नहीं है. Corresponding sides क्या है? Proportional है. Okay. Now comes to the 15 point. A figure and its image under enlargement are similar. Okay. अगर आपका सपोज एक फोटोग्राफ है और वो बहुत अच्छा है और आप उसको बड़ा कर लें, तो चाहे वो बड़ा फोटोग्राफ हो या छोटा हो, दोनों होंगे तो एक जैसे ही ना, यानी इसकी शेप तो एक जैसी होगी. तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है सिमिलर फिगर की. सो अ फिगर एंड इट्स enlargement are the example of similar figure. 16. No specific symbol is used for similar figure. 17. There is no standard notation of or symbol for similar figure, and if two figures are similar, then their corresponding sides are also. If two figures are similar, then their corresponding sides are proportional. Okay, I have to write this point again for you. So just give me a few seconds. First, I have to close this. Okay, look here. If two polygons are similar, then all corresponding angles are equal. All corresponding angles are equal, and always remember all corresponding sides are proportional. ये देखो, ये मैंने लिखा भी है. All corresponding sides are proportional. When two figures are similar, then all corresponding sides are proportional. And secondly, all ratios of corresponding sides are equal. रेशियो कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ. सपोज अगर आपका टू ऑब्जेक्ट्स है, एक अगर आपने अपर साइड लिया है तो दूसरे का भी अपर ही लेंगे. अगर एक का बॉटम लिया तो दूसरे का भी बॉटम ही लेंगे. और ये जो हम लेंगे तो इनके सेंटर में जो साइन होगा, रेशियो के सेंटर में साइन, वो किस चीज का होगा? वो इक्वल का होगा. ओके. सो 4/5 इज इक्वल टू 6/8. ये मैंने जो मेरे पास टू पॉलीगॉन्स है जो सिमिलर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसकी साइड्स दी है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनके जो रेशियोज हैं वो क्या है? इक्वल. क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टू फिगर्स आर सिमिलर देन देयर corresponding sides are proportional. देखिए अब ये क्लियर हो गया. उनके corresponding sides क्या है? प्रोपोर्शनल है. ओके. इसको मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए. और ये दोनों पर्सन अब इकट्ठे लिखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. सही हो गया? Look here. If two figures are similar, then their corresponding sides are proportional. And in similar figure, ratios of their corresponding side. जो corresponding sides का ratio है वो क्या है? Equal. Ratio equal है, लेकिन corresponding sides क्या है? Proportional. Clear? Again, we have to repeat. There is no special notation used for or symbol used for similar figure. No special notation or symbol used for similar figure. And that we have to again revise it. Congruent figure. What are congruent figure? The corresponding angle and sides of congruent figure are equal. Congruent figure में angles भी और sides भी क्या है? Equal. लेकिन similar figure में angles तो equal है, लेकिन sides क्या है? Proportional है. Clear? Now we come to the last point. In similar figure, ratio of corresponding sides are equal, but actually the corresponding sides are proportional. Okay. So this is all about main points.